Bismillahirrahmanirrahim. Students, in today's lecture, we will discuss the following points: equation of a straight line, secondly, equation of horizontal line, equation of a vertical line, condition for two perpendicular lines, condition for parallel lines. इनको हम डिस्कस करेंगे टर्न बाय टर्न। सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इसको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा किया है और इसमें एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पॉइंट ए, जिसके एंड पॉइंट्स आर द ए एंड सी, और ये पॉइंट ए पे कट कर रही है वाई एक्सिस को। तो इनके कोऑर्डिनेट्स जो पॉइंट ए के हैं, दीज आर द 0 एंड सी, एंड पॉइंट पी हैज द कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई। If a straight line cuts at point A, 0 and C on vertical axis, and its other point is P. Then equation of straight line is y is equal to mx plus c, where m is equal to gradient of line and c y intercept. Next, we are going to discuss the equation of horizontal line. हम इसका भी कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा करेंगे
कार्टेशियन प्लेन ड्रा करने के बाद इसको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। भी हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रा किया है जिसमें एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट है। एक लाइन है जिसको हम एक्स वाई लाइन कह सकते हैं और ये वाई एक्सिस को कट करती है एट पॉइंट ए। और अब इसमें जो हमारे पास ये जो टोटल इसका ओरिजिन से डिस्टेंस है दैट इज बी। तो we this line is parallel, it cuts on y-axis and it is parallel to x-axis. We call this line horizontal line. If a line cuts at y-axis and it is parallel to x-axis, it is known as horizontal line. और इसकी जो इक्वेशन होती है दैट इज y इज इक्वल टू बी। व्हाट इज बी? बी इज एनी कांस्टेंट नंबर। और इसमें जो ग्रेडियंट होता है हमारा वो 0 होता है and it is the required equation of a horizontal line. Now we are going to find out the vertical line, equation of vertical line. If a line cuts at x-axis and it is parallel to y-axis, it is known as the vertical line. Equation of vertical line is x is equal to a. What is a? A is constant. Now we are going to discuss the condition for the parallel of two lines. अगर दो लाइन्स पैरेलल हैं, फॉर एग्जाम्पल a line L1 is parallel to second line L2, then gradient of line L1 should be equal to the gradient of L2. If the gradient of line L1 is m1, then
the gradient of line L2 is M2. They will be equal to each other. Same like that, condition for two perpendicular lines. If two lines are perpendicular to each other, it is perpendicular sign. Then gradient of line L1 should be reciprocal minus reciprocal of gradient of second one. It will be reciprocal of the second line. Reciprocal of gradient of second line. If gradient of first line is m1, it should be minus 1 over m2. We can also write this one, m1 into m2 is equal to minus 1. This is the condition for the perpendicular of two lines. Gradient of line L2.